ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. இந்த பதிவில் 27வது ஸ்லோகத்திலேருந்து சேவிக்கலாம். ஸ்ரீபராசரபட்டார்யக ஸ்ரீரங்கேஷ புரோஹிதக ஸ்ரீவத்சாங்கசுதஸ்ரீமான் ஸ்ரேயசே மேஸ்து பூயசே. ते सात्या सन्धि देवा जननी गुणवपुर्वेषवृत्तस्वरूपैः भोगैर्वा निर्विशेषात् सवयस इव ये नित्यनिर्दोषगन्धाः. हे श्रीः श्रीरङ्गभर्तुस्तव च पदपरिचारवृत्तैः सदापि प्रेमप्रार्थनाभावविलहृदय हठात्कारकैङ्कर्यभोगाः. स्वरूपं स्वातन्त्रयं भगवत इदं चन्द्रवदने त्वद्दाश्लेषोत्कर्षाद् भवति खलु निष्कर्षसमये. त्वामासीर्मादः श्रीः गमिदुरितमित्थं त्वविभवः तत् अन्धर्भावत्वां न पृथगभिधत्ते श्रुतिरपि. तव स्पर्शाधीशं स्पृशति कमले मङ्गलपथं तवेदं नोपाधेरुपनिपतितं श्रीरशी यतः प्रसूनं पुष्यन्तीमपि परिमलर्तितं जिगदिषुः न चैवं त्वादेवं स्वदत इति कश्चित् कवयते. अभाङ्गा भूयांसो यदुपरि परं ब्रह्म तदभूत् अमी यत्र पित्रा शतमकादिस्तदधरात् अधश्रीराम्नायक तत् उपयम् उशंस्त्वं प्रणिजहौ प्रषदिः सा राज्ञो यदपि च पुरी कोशगधनम्. स्वस्ति श्रीस्त्वं विष्णोः स्वमसि तद एवैष भगवान् त्वाधाय धर्ती त्वेप्यभवद परिधीनविभवः स्वया दीप्त्या रत्नं भवद विमहार्हं न विगुणं न कुण्डस्वातन्त्र्यं भवति च न चान्याहितगुणम्. प्रसगनबलज्योतिर्ज्ञानैश्वरी विजयप्रदां प्रणतवरनप्रेमक्षेमङ्करत्वपुरसराः अपि परिमलः कान्तिर्लावण्यमर्चिरितीन्दिरे तव भगवतः चैते साधारणा गुणराशयः. अन्येऽपि यौवनमुगा युवयोः समानाः श्रीरङ्गमङ्गलविजृम्भण वैजयन्ती. तस्मिंस्तव त्वयि च तस्य परस्परेण विस्तीर्य दर्पण इव प्रचुरं स्वदन्ते युवत्वातौ तुल्येऽप्यपरवसता शत्रुसमन स्थिरत्वादीन् कृत्वा भगवती गुणान् पुंस्तव सुलभान् त्वयि स्थिरत्वैकान्तान् मृदिमपति पारार्त्यकरुणाक्षमादीन् वा भोक्तुं भवति युवयोरात्मनिप्पिधाम्. घनकनकद्युधियुवदशामभिमुक्तदशां युवतरुणद्वयोरुचितम् आपरनातिपरम् ध्रुवं समाने देशविनिवेशि विभज्य हरौ त्वयि चेकुशेषयोदरविहारिणि निर्विशसीम् अङ्गं ते मृदुचीतमुक्तमधुरोधारैर्गुणैर्कुम्भतः क्षीराब्धेगे किं रुचिषिताम् उपगताम् अन्ये महार्घास्ततः इन्दूकल्पलता सुधा मधुमुखा इत्याविलां वर्णनाम् श्रीरङ्गेश्वरी शान्तकृत्रिमकथं दिव्यं वपुनार्हतीम्.
प्रणमदनुविदित्सा वासनानम्रमग्रें प्रणयि परिशिशीषा कुञ्चितं पार्श्वकेन कनकनिगषसञ्जसम्पकशृक्समान प्रवरमिदमुदारं वश्मवाचाम भूमिः एकं न्यञ्जनधिक्षमं मम परं साकुञ्चया पादाम्बुजम् मध्ये विष्टरपुण्डरीकमभयं विन्ध्यस्य अस्ताम्बुजं त्वां पश्येम निषेदुषीं प्रतिकलं कारुण्यकूलङ्कष स्माराभाङ्गतरङ्गमम्बमधुरं मुक्तं मुखं बिभ्रतीम् सुरभिदनिगमान्तं वन्दिष्येन्दिरायाः तव कमलपलसा प्रक्रियं पादयुग्मं वहति यदुभमैर्धैर्वैजयन्ती हिमाम्बः प्लुतिभिरिव नवत्वं कान्तवाहान्तराले त्वत्स्वीकाराकलावलेपकलुषा राज्ञां तृशोधुर्वचाः नित्यं त्वन्मधुभानमत्तमधुभ श्रीनिर्भराभ्यां पदीं धृग्भ्यामेव हि पुण्डरीकनयनं वेदोभिधामासते साक्षाल्लक्ष्मी तवावलोकविभवः काक्वाकया वर्ण्यते आनन्दात्मभिरीशमज्जनमदक्षीबालशैरागल प्रेमार्तैरभिकूलमुत्पह कृपा सम्प्लावितास्मादृशैः पद्मे ते प्रतिबिन्दुपद्मकलिग ब्रह्मादिविष्कम्भकैः ऐश्वर्योद्गमगद्गदैरशरणं मां पालयालोकितैः पादारुन्धुतमेव पङ्कजरजशेरीपृशालोकितैः अङ्गं लानिरधाम्भ सागसविदौ लीलारविन्दग्रहः ढोलाते वनमालया अरिभुजे आकष्टशब्दास्पदम् केन श्रीरधिकोमलादनुरुयं वाचां विमर्दक्षमाम् आमर्यादमगण्टकं सनयुगं नाद्याभिनालोकित भ्रूपेदस्मितविभ्रमा जगति वा नैसर्गिकद्पायसाम् शोधे शैशवयौवनव्यधिकरो गात्रेषु ते सौरभं भोगस्रोतसि कान्तदेशिकघरघ्रागणे गागक्षमः आमोदात्पुदशाली यौवनदशा व्याकोशम् अम्लानिमत् सौन्दर्यामृतशेखशीतलमिदं लावण्यसूत्रार्पितम् श्रीरङ्गेश्वरी कोमलाङ्गसुमनः सन्धर्वनं देवि ते कान्धोरः प्रतियत्नमर्हति कविं दिङ्माम् अकण्ठाकुलम् मर्मस्पृशो रसशिराव्यधिविध्यवृत्तैः कान्तो बभोगललितैर्लुलिताङ्गियष्टिः पुष्पावलीवरसिकभ्रमरो बभुक्ता त्वं देवी नित्यम् अभिनन्दनयसे मुकुन्दम् कनकरसना मुक्ता ताडङ्गहार ललाटिकां मणिसरतुलाकोटिप्रायैर्जनार्दनजीविके प्रकृतिमधुरं गात्रं जागर्दि मुक्तविभूषणैः वलयशकलैर्दुग्धं पुष्पैश्च कल्पलतायताम् सामान्यभोग्यमपि कौस्तुभवैजयन्ती पञ्चायुधादिरमणः स्वयमेव बिभ्रत् तद्भारकेतमिव ते परिहर्तु कामग श्रीरङ्गधाममणिमञ्जरी कागदे त्वाम्
यदि मनुजदिरश्यां लीलया तुल्यवृत्तेः अनुजनुरनुरूपा देवी नावातरिष्यम् असरसमभविष्यन्नर्मना तस्य मातः तरतलधरविन्दोदन्दकान्ताय दाक्षीं स्खलितकटकमाल्यैर्धोर्भिरप्तिं मुरारेः भगवती दधिमातं मत्नदश्रान्तिसान्त्यै भ्रमत् अमृततरङ्गावर्ततः प्रादुरासीः स्मितनयनसुधाभिषिञ्चति चन्द्रिकेव मातर्मैथिली राक्षसी स्त्वयि तदैवार्त्रावराधास्त्वयां रक्षन्तया भवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृतां कागं तं च विभीषणं शरणम् इत्युक्तिक्षमौ रक्षतः सा नः सान्द्रमहाकससुखयतु शान्तिस्तवाकास्मिकी माधर्मैथिली राक्षसीस्त्वयि तदैवार्त्रापराधास्त्वयां रक्षन्तया पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृतां काकं तं च विभीषणं चरणम् इत्युक्तिक्षमौ रक्षतः सा नः सान्द्रमहाकससुखयतु சாந்திஸ்தவாகாஸ்மிகி. இதோட 50 ஸ்லோகங்கள் நிறைவடைந்தது. மீதி இருக்கக்கூடிய 11 ஸ்லோகங்கள் அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பராசர பட்டர் திருப்படிகளே சரணம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக.